Judge it and give it all the respect that you can. So that's the job of the jury, to look at every part of the film. And then to choose between those two is very tough. Between all those, it's very tough to choose. Yeah. It's a very difficult job to be jury. Talking to the rest of the jury members, obviously, as Shekhar sir has pointed out, it's not an easy job, very difficult to, but, putting the best of the world cinema for Indian audiences here, amazing experience to be part of jury here. Very much. The hospitality is enormous, and going to the public screenings, they're very well supported. So there's a real buzz in town because of the festival, and it will engender a lot of interest in the film industry across the country. And the response has been tremendous. People have received the footfall of people, the screenings, the master classes. Obviously, amazing festival we were having. Yes, the selection of movies in all the festival is really wonderful. And it covers a lot of diversity of movies, which is very interesting. And let me go across to other members of the jury. We're talking to people in the jury. Not an easy job, but amazing feat to be able to put those films in front of Indian audiences, and in a place like Goa, tremendous response. The film lovers here have responded well to the festival. Yes, and we have a beautiful tour of the world for 1 week, and a beautiful tour of the world with the jury, which is coming from all over the world too. We are literally showing these films to almost to the 1/3 of the world here. So that's what makes Indian films, showcasing films in India special. Yeah, I had the chance to go in a public screening, and it's wonderful to see these big theaters absolutely full of film enthusiasts. A story. We just express ourselves through stories. That's how we express ourselves. And certainly in Mahabharata is all the stories combined in one huge story. And sweetheart, how has been your experience here? You've been attending the entire festival, or you've just joined that? I've been here since the beginning. I've loved it. It's been so much fun. One of my first times on a red carpet, so I'm a little bit nervous, but it's been really exciting. And I've met so many amazing people. And yeah. Lovely talking to you. Thank you so much, the respected jury, talking to us. Enjoy the evening. We have an amazing lineup here. The international jury, the chairperson, and other members here. थैंक यू अक्षय। और हमारे साथ यहाँ रेड कार्पेट पे हैं वो कथाकार, वो कहानीकार जिनकी कहानियों से सभी लोग जितने भारत में हैं, जो रेडियो सुनते हैं, जो इंटरनेट देखते हैं, उनकी कहानियों से उनके घर सजे हुए हैं। स्वागत करते हैं नीलेश मिश्रा जी का। और आपके साथ है आपकी नन्ही सी बेटी वैदेही। वैदेही, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड कार्पेट पे मुझे लगता है कि आप सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं, क्यों? अच्छा, अगर 2 लाइनों में कोई छोटी सी कहानी सुनानी हो पापा की तरह, तो क्या सुनाएंगी? एक बार आप और आपके दोस्त। हाँ, एक जलेबी का जंगल और मेरे दोस्त जो आए थे मेरे साथ। एक जगह जहाँ पर जलेबी का जंगल था। वहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे मेरे साथ, तो हम जलेबी खाते थे। तो जलेबियों को पकड़ती कैसे थी उछल उछल कर? हमारे पास सब वर्ल्ड में सब कुछ जलेबी ही था, तो हमें पेड़ पे उछल के जलेबी लेनी होती थी। ऐसे ही हर जगह जलेबी होती। क्या बात है, यहाँ पर भी एक कहानी है जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है, क्यों नीलेश जी? मुझे लगता है कि बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों का जो बचपन है वो इसी तरह से ऐसे अनुभवों के साथ पलता है। और ये आज जहाँ मैं आया हूँ IFFI में, और जब भी आता हूँ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग कल्चर्स का जो एक प्रतिबिंब है ये। मैं कई युवा फिल्म मेकर्स से मिला, जो कोई गोवा से है, कोई कलकत्ता से है, कल मैं चंबल से किसी से मिला, और जो वहाँ की ज़मीन, वहाँ की भाषा, वहाँ की कहानियाँ लेके आए हैं। और मैंने पूछा भी कि कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए ग्वालियर में बैठ के यहाँ शामिल होना, और उन्होंने बताया कि इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस, इट वाज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अद्भुत है ये समागम, ये फिल्मों का महाकुंभ। सच में अद्भुत है ये समागम, ये फिल्मों का महाकुंभ IFFI 2023। चलते हैं अक्षय के पास, जो है एक बेहद खास मेहमान के साथ इस रेड कार्पेट पे।
Well, what do I say and how do I introduce this amazing gentleman? Rishabh Shetty needs no introduction. The man has been sensational with his beautiful film Kantara that has struck chord with the entire nation. And lovely to have you, Rishabh, on the red carpet at the 54th IFFI. Thank you so much. Well, there's so much to say, there's so much to talk about. Your film has touched everybody. It's a beautiful film. The content of the film, cultural ethos of the film, the contemporary theme of the film. Amazing to have you on IFFI. I mean, please talk about your journey. तो पहला एक तो बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं आई थिंक 2002 या 3 में पहली बार मैं टीवी पे आया था, वो दूरदर्शन में. सो बेंगलुरु में कॉलेज में था उस समय. हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते, तो उस इधर आके एक माइम शो किए थे और कुछ स्क्रिप्ट किए थे मेरा सारे टीम. सो दैट इज़ द फर्स्ट मेमोरी विद दूरदर्शन. सो आज हम इतनी साल के बाद IFFI में मैं आप लोगों को मिल रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है. Rishabh, Doordarshan is delighted. The entire nation is delighted. Your film has touched everybody, and so lucky to have you here on the red carpet. Amazing festival. Have you attended other films also? You've been attending master classes, have been interacting with a lot of young filmmakers. नो, मैं कल रात ही आया. सो CM साहब को मिला सर. सुबह उठ के सीधा कांतारा शो थे, उधर जाके ऑडियंस से इंटरेक्शन किया था. लास्ट टाइम एक सेशन भी था, तो उधर कुछ लास्ट ईयर उधर कुछ इंटरेक्शंस किया था. तो लास्ट टाइम तो आए हम लोग पूरे प्रमोशन में बिजी थे, और वी आर हेडिंग 50th डे टुवर्ड्स 50 days कांतारा. सो आई वाज अ गेस्ट इन IFFI. तो मैं सोचा भी नहीं था इस बार कंपटीशन सेक्शन में कांतारा सेलेक्ट होगा और 15 फिल्म में हमारा भी फिल्म होगा करके. सो दैट इज अ proud moment, and thank you IFFI. Thank you so much for talking to us, Rishabh. Thank you so much. Pleasure to have you here. Enjoy the evening. We have an exciting lineup. Go ahead and enjoy the evening. Thank you so much. That was Rishabh Shetty. और ऋषभ शेट्टी जी के बाद यहाँ पर रेड कार्पेट पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं. स्वागत करना चाहेंगे किरण कुमार जी का. इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, साथ में है शौर्य. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. किरण जी, कल के सेशन की बात करें, इन कॉन्वर्सेशंस विद द विलन्स ऑफ द इंडियन सिनेमा, फुल हाउस, जहां आमतौर पे ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी मोहब्बत जो है वो हीरो के लिए जाएगी, यहाँ सारी की सारी मोहब्बत दर्शक सिर्फ विलन्स के लिए उंडेलते जा रहे हैं. कैसे कैसे करते हैं आप ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नायक और खलनायक में ज़्यादा फर्क नहीं है. अब नायक के नाम के आगे आप खल लगाएं तो खलनायक हो जाता है. और खलनायक होना एक, देखिए, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने हमेशा एक रिलेट किया है, मैंने पर्सनली विद माय ऑडियंस, विद माय व्यूअर्स. और मैंने लीडिंग रोल भी किए, मैं हीरो भी रहा हूँ, मैंने विलन्स भी किए, मैंने कैरेक्टर एक्टर्स भी किया हूँ. और अब जब जैसे हम दूरदर्शन की बात करते हैं, तो दूरदर्शन में तो मेरी टेलीविज़न की शुरुआत ही दूरदर्शन के सीरियल से हुई थी. और दूरदर्शन में मैं हमेशा काम करता रहा. अभी मैं कंचना जी से यही कह रहा था कि दूरदर्शन में हर साल मेरा ऐसा कोई साल नहीं गया जब मेरा कोई ना कोई शो एयर पे नहीं हुआ. अब क्या होता है कि देखिए, टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है कि वो इमीडिएटली जोड़ देता है आपको व्यूअर के साथ. हमेशा हर इंसान जो है वो थिएटर में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फैमिलीज़ होती हैं जो टेलीविज़न से अपना गुजारा होता है उनका देखते हैं. और ख़ास तौर से जो हमारी जो रूरल ऑडियंस है, उनसे कनेक्ट हो जाता है दूरदर्शन का अगर आप शो करते हैं तो बाकी तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा. और कल का जो कॉन्वर्सेशन था विद कोमल नाटा, विद गोली साहब, रंजीत जी, रज़ा, गुलशन आए, इट वेंट ऑफ वेरी, बिकॉज हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम कभी भी किसी को छुपाते नहीं हैं. और मेरी पर्सनली आदत ये है कि अगर मैं दिल से बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो मुझे सुन रहा है उसके दिल तक ये बात पहुँचे. तो सिर्फ बात करना ही ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है कि आप किसी के दिल तक पहुँच सकें जो आपको सुन रहा है. तो मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा. और उम्मीद करता हूँ कि अभी तो सफ़र मुझे आज भी ऐसा लगता है 50 साल काम करने के बाद कि आज भी मेरा सफ़र शुरू हुआ है. और दिस इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड आई होप इट गोज़ ऑन. नाउ माय सन शौर्य इज़ हियर. शौर्य, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से लम्हे रहे हैं IFFI 2023 के जिन्होंने आपके दिल को छुआ? IFFI has been organized so well, and मैं डैड से वही जिक्र कर रहा था कि the way it's been done and the way I've been watching the entire setup इतना अच्छा रहा. एंड लाइक कल जैसे विलन्स के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि खलनायक के बिना नायक अधूरा रह जाता है. एंड
उनका एक वेटेज होता है वो फिल्म और वो प्रोजेक्ट के, जिससे वो प्रोजेक्ट को एक एक डेप्थ मिलती है और एक वेटेज आता है. तो as I've been seeing dad, Ranjit uncle and all, Raza uncle growing up in my younger days, तो मैं देखता था कि द खलनायक का एक कितना कंट्रीब्यूशन है वो मूवी के लिए, कि वो it makes he makes the movie so memorable कि audience even after 15 to 20 years they remember these specific characters, and that was something which was so wonderful watching them talk and having such a candid talk with all of us. तो देखिए अगर लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी मिली एक खलनायक तो करना डेफिनेटली वुड. आई वुड लव टू प्ले अ विलन, मे बी नॉट एज गुड एज हिम बट बेटर, आई होप बेटर. एक पिता हमेशा यही कहेगा कि मे बी बेटर. जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी हो, मैं सिर्फ अपने पुत्र के बारे में ही नहीं कहना चाहता हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि जो भी नए नए लड़के आएँ जो विलन का जो नेगेटिव रोल्स करें वो हमसे बेहतर हों, बेहतर साबित हो. जिस तरह हमने आर्ट की और हमने कमर्शियल सिनेमा की के माध्यम से जुड़े रहे, सेवा की, तो वो भी ऐसा ही कुछ करें. तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे आज मुलाकात हुई, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. Thank you so much for joining us. Over to you, Akshay. Thank you, Satyapriya, and I'm so lucky to have the Honorable Chief Minister of Goa with me, Dr. Sawant. I mean, pleasure to have you, sir. And first of all, I'll begin with a big congratulations to you. Thank you. So we have very well organized the IFFI. And once again for this closing ceremony, I'm welcoming all the guests, all the Kalakars, those who have come specially for this function, and congratulations for the Michael Douglas for the Satyajit Ray Puraskars. It is one of the best IFFI this time we have given for the people of India and for the globe. चीफ मिनिस्टर सर, ऑब्वियसली वेन्यू के बारे में हम जब भी बात करते हैं दिल खुश हो जाता है. एक परमानेंट वेन्यू है, 17वां साल बैक टू बैक इन कंसेक्टिव ईयर्स गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है. एक सिनोनिमस बन गई है बात IFFI की. तो किस तरह से देखते हैं इस एवोल्यूशन को, IFFI फेस्टिवल का भी और गोवा के लिए कल्चर एंड इकॉनमी? जी हाँ, हमेशा के लिए गोवा ने बहुत ही अच्छा IFFI के लिए सब वेन्यू क्रिएट किया है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है. हमेशा के लिए लोग यानी IFFI जो गोवा में होते हैं उसके लिए भी अट्रैक्ट होते हैं, और ओवरऑल IFFI का इंफ्रास्ट्रक्चर और गोवा में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया. इससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर में क्रिएट करेंगे. हमेशा के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें सपोर्ट रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि हर साल का IFFI इससे भी ज़्यादा अच्छा होते जाएगा. सर, ऑल इंक्लूसिव, एक ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट बल्कि हर इंसान जो भले ही बीच पे घूम रहा हो, 3 ओपन स्क्रीनिंग्स रखी गई है. ऑल इंक्लूसिव एक फेस्टिवल रहा है ये. कमाल का एक्सपीरियंस लोकल लोगों के लिए. बहुत खुश है यहाँ पे. ऑब्वियसली एज द हेड ऑफ द स्टेट यू विल बी डिलाइटेड विद दैट. आपकी बात सही है, इस बार इंक्लूसिव एक्सपीरियंस रहा है. हमेशा के लिए ओपन स्क्रीनिंग रहा है कि बीचेस पे जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला है, मुझे लगता है कि गोवा और बाकी यहाँ के जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन्होंने भी IFFI एंजॉय की है. जी हाँ, डेफिनेटली कि एक बहुत बड़ा शानदार IFFI का सोहला रहा है. So just one last question. Obviously, थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल जूरी से बात हो रही थी. हेड ऑफ द जूरी शेखर कपूर और उनके साथी थे. एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा एज अ फेस्टिवल काफ़ी एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, उसको प्रमोट करता है सिनेमा की ग्रोथ को. कैसे देखते हैं इंडिया की सिनेमा ग्रोथ को? डेफिनेटली कि जिस तरह से सिनेमा की ग्रोथ इंडिया में हो रही है, मुझे लगता है इट विल लीड फॉर द ग्लोब इन फ्यूचर. दैट्स ऑल. Thank you so much, sir. That was the Honorable Chief Minister of Goa giving his view about the amazing festival that we are having. And another film that was showcased here was Endless Summer Syndrome. And I am lucky to have the producer, the actress and actor of this film, Endless Summer Syndrome, with me. They'll be joining us shortly. Hi, hello. Good to have you, ladies. Hi, I'm Lindsay Taylor Stewart. I'm one of the producers of the Endless Summer Syndrome, and we are just so happy to be here at IFFI Goa. And what a beautiful reception we had today for our screenings. So what an amazing experience Goa and India has been for us. We are equally delighted to have you. Please introduce yourself to the viewers on Doordarshan. Hi, I'm Frederica Milano, French actress. And I'm Sophie Collomb, French actress too, from Paris. Endless Summer Syndrome, very interesting name. What the film is about, please tell our viewers.
Well, it's a trip for a family in an idyllic summer holiday, but our leading lady gets a disturbing phone call saying that her husband is sleeping with one of their 2 young adult adopted children. And so Sophie Colon does a fantastic job throughout the whole movie, as well as Frederica Milano, Jem Degger, and Matteo Capelli, directed by Iranian director Kava Danishman. And we are all Prague-based and Parisian-based, and we are just so excited to have our Asian premiere under our belts. Endless summer syndrome and endless amazing entertainment is lined up for you ladies. Please go ahead and enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. And on the red carpet, we have the director of Dil Hai Grey, Mr. Sushi Ganeshan. A very warm welcome on the red carpet of the closing ceremony of IFFI 2023. आपकी फिल्म की बात करें तो आपकी फिल्म का जो गाला प्रीमियर है कल हुआ था यहाँ पर, कैसा रहा ऑडियंस रिएक्शन, क्या एनर्जी थी जिसे आप लेकर यहाँ IFFI से वापस जाएंगे? I never expected that the crowd really enjoyed, and it's been connected very well actually. So honestly, one of the crowd after this Q&A, that one person said, "Sir, we are waiting for part 2." So that is, I think, that's a success. That when the film ends, they are expecting that one more sequel will come, and then they're comparing with the blockbuster films, like it's like a very engaging. So I mean, any director just would love to hear that appreciation from them. I think this film connected well with the audience, because in fact, one of the critics who said, I'm very scared to carry my phone because I'm sharing, because anybody can penetrate into any time into my privacy. So films give me a great awareness to me. So that is the biggest appreciation yesterday we received from this audience. And it's all about making cinema that connects with the audience, that tells the story of the audience and today's times, isn't it? Exactly. So basically, this particular film talks about how today we are sharing a number of information in social media handle. If it's lands with somebody illegally or some negative person's hand, how that person has been getting victimized. That's the story we are talking about. I think everybody, because every family, sister, mother, or just wife, everybody knows been somewhere they live their information with social media handles. So this film will be giving big awareness to the society. That's what I believe in. Thank you so much for joining us on the red carpet. I really thank this IFFI, because it's a great platform. Before my film got selected in Toronto Film Festival, that is an international platform, but appreciation getting from our home ground, it's always a special. So thank you, IFFI. Thank you so much for joining us, and please enjoy the closing ceremony. Thank you. So Akshay, the countdown begins, and we are just about to witness the gala closing ceremony of IFFI 2023. Absolutely, so much is lined up. Amazing music, amazing dance numbers, lot of awards they are lined up here, and we have one more interesting guest lined up here. I'm going to talk to her very shortly here, but rightly said, amazing festival closing ceremony is going in full guns blazing here. Very, very exciting, full flow here, and we are here with the amazing Isha Gupta here. Hi, Isha. Hi, how are you? We are very well. Isha, it's I have a little surprise for you. I want to sing something for you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Isha. Happy birthday to you. Happy returns of the day, darling. So good to have you. We remembered it from the last time when we had caught up with you. This birthday just makes it special because this time I have my mother. Hi. She and my sisters, they Rekha Gupta and Neha Gupta. So it makes it special. I think it's after 6 years that I'm actually with my family. So how does it feel walking the red carpet of the IFFI closing ceremony on your birthday? Listen, it feels... I couldn't have had a better birthday. Last year also, strangely, I was here on my birthday for the closing. And it's always wonderful because being from the Indian cinema, you're doing exactly what you love on your birthday, representing the Indian cinema. And
Indian cinema has, no cinema has boundaries, you know. We are boundaryless, we are global, and that's what IFFI is about, representing India and the international culture. ये हमने खास तौर से आपके बर्थडे के लिए क्लोजिंग सेरेमनी रखी है यहाँ पे। मैंने बोला था कि अरे छोड़िए, बट देन मुझे पता चला कि बोला कि नहीं 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 आपका बर्थडे। आप छोड़ने वाली चीज है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। No, it's so good to have you here on the red carpet. Thank you so much, thank you. Isha, you've been part of the steering committee, and you know, otherwise, like, what's been your experience like at IFFI? आपने बताया पिछले 5-6 साल से आप आ रही हैं as a full-fledged commercial actors. You travel all around the world. 54th edition, amazing growth. ग्रोथ से ज़्यादा आप ये देखिए कि हमारा यू नो इंडियन सिनेमा एंड हमारा कल्चर कहाँ से कहाँ पहुँचा है। एंड इवन हम लोग इस इंडस्ट्री से तब भी क्या होता है, आई थिंक IFFI इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अस बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री वी एंड अप मिसिंग कितने प्रोजेक्ट्स, कितने एक्टर्स, द होल वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड इज आवर प्लेटफॉर्म, यू नो। IFFI के वजह से क्या फ़ायदा होता है दैट इंटरनेशनली जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट हैं, एंड इन इंडिया हम वी कैन क्रॉस ओवर, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ IFFI. आई गेट इंट्रोड्यूस टू सो मच अमेजिंग सिनेमा थैंक्स टू IFFI. रेखा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत का ये अमृतकाल है और आप समाज सेवा से और सामाजिक बहुत सारे विषयों से जुड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि IFFI वो मंच प्रदान कर रहा है सिनेमा को कि पूरा का पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की इस फिलॉसफी का पालन करते हुए यहाँ पर एक साथ आए? मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस फेस्टिवल का मैं 2016 से हिस्सा हूँ। आई एम द मेंबर ऑफ प्रीव्यू कमेटी, और मैंने इतने सालों में मैंने ये देखा है कि जो ग्रोथ हमारे इंडिया सिनेमा की हुई है, तो वो बहुत ही हमको फ़ख्र करने वाली बात है। और हम सब पूरे वर्ल्ड की हम फिल्में लेकर आते हैं और उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं, और बहुत बार ये होता है कि हमको लगता है कि हमारे कल्चर से बहुत करीब ये हो रहे हैं और हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में जा रहा है। Absolutely, rightly so. We have been talking about it, how Indian cinema is going global. Thank you, Isha. Thank you so much talking to us. Enjoy the evening. Thank you, ma'am. Isha. Thank you, Rekha ji. Well, always a pleasure talking to Isha. You know, she's been a frequent feature of International Film Festival of India, and here at the red carpet for the closing ceremony and the 54th edition, it can't get better than this. So, Satyapriya, amazing time you've had. Just a few minutes left for the closing ceremony to begin, और हम यहाँ देख रहे हैं कि सितारों, ऐसा लग रहा है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हैं। सितारों की महफिल यहाँ लगी हुई है और सब के सब यहाँ उत्सव मना रहे हैं भारत का, सिनेमा का, और IFFI 2023 इस उत्सव का नाम है। कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिली, और मैं ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था कि किस तरह से गोवा का कल्चर इंडियन फिल्म कल्चर का एक हिस्सा, परमानेंट फीचर बन गया है। सत्यप्रिया, पिछले 10 दिनों से हम यहाँ पर हैं, बल्कि 10-12 दिनों से हम यहाँ पे गोवा के कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं। किस तरह की चीज़ें आपने, लोकेशंस, खाना एंजॉय किया है? कुछ बताइए ज़रा अपने दूरदर्शन के व्यूअर्स को। व्हाट काइंड ऑफ गोवन क्यूजीन यू हैव ट्राइड हियर? आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैं ये कहूँगी कि नॉन वेजिटेरियन फूड, सी फूड तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी बढ़िया सी कोंकणी क्विजीन जो है वेजिटेरियन, वो ट्राई की है। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की ओर, जिसका हम सबको इंतजार था, द कल्मिनेशन ऑफ दिस 9-day long sojourn, which is IFFI 2023. It's time to go inside the auditorium and enjoy. Fourth International Film Festival of India, streaming exclusively on Colors and Geo Cinema की grand closing ceremony में आपका तहे दिल स्वागत है। This year, IFFI has broken records, set new benchmarks and reached many milestones. And to conclude our celebration of 9 days, let's welcome our host, who's an epitome of wit, elegance and charisma. Actor, model, television presenter, and India's most loved face, Mandira Bedi.
grandeur, elegance और दुनिया भर के अमेजिंग फिल्म मेकर्स से भरे इस स्टेडियम में मैं मंदिरा बेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. And it is a privilege to be hosting this evening in front of path-breaking dignitaries and geniuses of the cinema world. इस साल के इफ़ी को देखकर हम सब सिर्फ यही कह सकते हैं, इतिहास रचते देखना है तो गोवा आओ, इफ़ी आओ और जॉय ऑफ सिनेमा का जश्न मनाते हुए खो जाओ. एक बार गोवा की हॉस्पिटैलिटी, गोवा के लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. They have been absolutely phenomenal. Ladies and gentlemen, आज की शानदार शाम की शुरुआत करने से पहले लेंगे हमारी मातृभूमि का नाम और करेंगे उसे प्रणाम. May I request all those who can to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय जय हिंद. Ladies and gentlemen, IFFI over the past few years has become a benchmark event. It defines and shows the world कि एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को कैसे किया जाना चाहिए. पिछले 9 दिनों ने सिर्फ जॉय ऑफ सिनेमा को सेलिब्रेट नहीं किया है, बल्कि सिनेमा और फिल्म फेस्टिवल की किताब में ऐतिहासिक कारनामों को अंजाम दिया है और 270 इंटरनेशनल और इंडियन फिल्म्स को स्क्रीन किया, जिसमें 25 फीचर फिल्म्स और 20 नॉन फीचर फिल्म्स भी थी. एक बार इस जबरदस्त अकम्पलिशमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. अमेजिंग. 20th नवंबर से 28th नवंबर के इवेंटफुल 9 दिन किसी फिल्म से कम नहीं थे. बड़े बड़े सुपरस्टार्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया के हुज हू और सिनेमा डिस्कशंस, न्यूज़ मेकिंग मोमेंट्स. IFFI 2023 सच में एक सुपरहिट, सुपर इम्पैक्टफुल सिनेमा के जैसे था. इसलिए आइए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है जिनमें इन 9 दिनों की सिनेमा सेलिब्रेशन को हमने कैप्चर किया है. कैन वी प्लीज हैव द 54th IFFI film.
स्टार-स्टडेड, स्टनिंग एंड so कलरफुल. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इफी के लिए. Come on, big round of applause. अब हम करते हैं आज की शाम की बात. आज शाम हम सिनेमा जगत की डिग्निटरीज का करेंगे सम्मान. हमारे ऑनरी डिग्निटरीज का सुनेंगे प्रमाण. नेशनल अवार्ड विनिंग आयुष्मान खुराना की परफॉर्मेंस होगी. हार्मनी ऑफ पाइन्स का नेक्स्ट लेवल म्यूजिक और अमित त्रिवेदी के साथ द रिच वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की मस्ती में खो जाएंगे. सो गेट सेट फॉर अ फायरी नाइट जहां हम इफी को कंक्लूड करेंगे और इस साल के मुकाबले के विनर्स को करेंगे अनाउंस. हाउ अबाउट वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर व्हाट्स लाइन्ड अप अहेड. तालियां तो हमेशा गूंजती है, पर कुछ महान हस्तियां होती हैं जो इन तालियों की जिम्मेदारी उठाते हैं. मैं अब मंच पर ऐसे एक हस्ती को बुलाना चाहूंगी जो पिछले साल दर साल इफी को सफल बनाने के पीछे ढेर सारी मेहनत करते हैं. गोवा की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी सांसों को गोवा की तरक्की और इफी के विकास के लिए न्यौछावर करते हैं. इसलिए द 54th इफी स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन जियो सिनेमा एंड कलर्स टीवी के सक्सेसफुल 9 दिनों की झलकी देने के लिए बुलाते हैं उन्हें जो हैं गोवा के रखवाले, गोवा की जान, गोवा के लोगों की धड़कन, द स्टेलर, द हार्ड वर्किंग एंड द एग्जेम्पलरी Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Good evening, friends. 54th IFFI closing ceremony. Present with me for this closing ceremony, all the ministers, all the MLA, Vice Chairman of the ESG, movie stars, icon and festival directors, Rishib Shetty, Ayushman Khurana, and I think the Michael Douglas, he will reach soon. The esteemed guests from across the globe, the member of the Indian film fraternity and fellow cinephiles. It is the immense and heartfelt gratitude that I stand before you today to mark the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India. At the onset, I extend my greetings to all the winners under the different category. May you continue to inspire more and more talent. I can certainly say this 9-day cinematic extravaganza held in the state of Goa has been the journey of discovery of the celebration of artistry and a testament of the power of the storytelling. Firstly, let us have a huge round of applause to 7,000 delegates who made this festival the vibrant and diverse gathering, the more movies lovers and from all over the India and beyond. You have made this cinematic fest the memorable one. This year's edition has been the testament to our commitment to fostering an inclusive environment where the diverse voice converge and cinematic excellence thrives. This year's festival showcased the 270 films from 78 countries, and we saw some of the spectacular premieres. As we bid farewell to this vibrant festival, I am overwhelmed by this response it is received. Over the past week, the Goa has been transformed into the hub of cinematic excellence, where this silver screening has been showcased, the calibre of the stories, emotions, cultures, and across the globe. The 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries, spanning and languages and culture.
The Cinema of the World segment, hosting over the 103 films, truly exemplifies the richness and diverse of the narrative from the various culture. It has been empowering for our delegates to immerse themselves in the cinematic extravaganza, witness emerging the trends and engaging with the bright minds at the film bazaar, fostering the platform for the collaborations and discussion. The inaugural Cinemela was the celebration of the India's diverse religion film, food and culture, understood the sense of our nation's cinematic heritage. This year's the festival has been particularly special for Goa. We have persisted in our efforts showcasing the rich cultural heritage of Goa and providing the platform for the Goan filmmakers to showcase their talent and creativity. The participation of the Goan filmmakers this year, the festival has been truly remarkable as these films have been also received the critical acclaim. This is a testament to the talent and potential of the Goan cinema, and I am confident that it will continue flourishing in the years to come. As we conclude the edition of the IFFI, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for consistent support for the state of Goa. I also heartfelt thank for the Union Minister of the Information and Broadcasting, Mr. Sri Anurag Thakur, and entire organizing team for the tireless efforts for making this festival grand success. I would like to thank the esteemed jury members for their dedication and expertise in screening the best film for this year's festival. The judgment has been instrumental in showcasing the finest cinematic works for around the world. I think we must give a round of applause to the National Film Development Corporation, Entertainment Society of Goa, and National Institute of Design, Ahmedabad, for their collaboration in efforts of making the IFFI 2023 a grand success. Let us also give the round of applause for the Michael Douglas, and who have legendary actor and producer who received the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award this year. Mr. Michael, who would love to see you bring your magic to Goa for your next project. We are eagerly extend, we welcome and lay the red carpet for you in future. With the lush green forest, river, waterfall, and quaint villages, with the terraced rice field, and Goa will be the filmmakers' paradise for offering the mix of historic and modern settings for the traditional Goan house for charming streets. When it comes to film locations, we have got the streamlined system for the shooting films, offering hassle-free permits to assess and diverse the locations. Being the Chief Minister of Goa, I also the Chairman of the Entertainment Society of Goa, I promise to extend all kind of support for the hassle-free film shooting and experience. With the incentive worth of the $3.6 million for the international filmmakers filming in India, co-productions as well as the post-production and VFX works and out of India, and the Goa is rolling out the red carpet for you. I stand committed to fulfill the vision of making the Goa is a heaven for the film industry. The plan and underway to this developed infrastructure providing the cutting-edge technology and incentivize the international filmmakers. And the family, I would like to thank all the cinephiles, the film enthusiasts, film lovers,
and who have made this festival vibrant and engage the experience. Your presence and enthusiasm and have been the driving